Adopted a 3-year investor awareness program that would conduct a lot of road shows, seminars. There will be media campaigns, and we've also designed an investor website which will be uploaded soon. And what we will be doing is we'll try and educate at least 10,000 investors in 1 year. The reason is because we need to increase the retail investor base of mutual funds. We have to strengthen the distribution of mutual funds as well, and in that, doing so, currently the code of ethics for distributors and investment facilitators is under review. We need to, as I mentioned, strengthen the distribution channels, because currently what is happening is most of the AMCs are using their banks, but we would encourage other private distribution companies as well to come forward. The SSCB plans to resolve the impetus, providing impetus for listing more Sharia compliant companies. Since we've got dearth of investment avenues, we'll have to work with the stock exchanges so that we can push more companies to get listed. And to resolve the key issue of fair pricing, the SSCB is in collaboration with market participants trying to encourage better trading platforms, and we're also considering the possibility of setting up an independent pricing agency, which would revitalize the debt market by bringing in by increasing transparency and liquidity. Well, thank you very much. In the end, I would say I hope more such events are organized so that we can brainstorm together and work forward for the development of the capital markets. Thank you. Thanks a lot, Brother Kamal Ali. Now I request Mufti Najeeb Khan Sahib. Mufti Najeeb Khan Sahib is the Sharia advisor of Habib Metropolitan Bank as well as the UBL investment funds. He'll be talking on Sharia screening. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है कि जिस बुनियाद पर हम इसको जायज़ करार देते हैं, उसमें सबसे पहली बुनियाद तो यह है कि स्टॉक की जो कंपनी होती है उसकी बुनियाद एज पर शरिया कॉन्ट्रैक्ट्स किस कॉन्ट्रैक्ट पे होती है। हम जब स्टॉक्स कह रहे होते हैं तो जो AOF शरिया स्टैंडर्ड्स इसको डिफाइन करते हैं स्टॉक कंपनी को, वो डेफिनेशन है बुनियादी तौर पे यहाँ पे दी हुई, एंड इट्स वेरी कॉमन थिंग बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन मुशारका, इज शिरकत है, और द स्पेसिफिक काइंड ऑफ शिरका विच इज शिरकतुल इनान, जिसकी बुनियाद पे ये जॉइंट ओनरशिप कंपनीज काम कर रही होती हैं। और जब कोई आदमी उसमें बराह रास्त भी खरीद सकता है, लेकिन इस्लामिक फंड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बुनियादी तौर पर कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको शेयर खरीदने में दुश्वारी पेश आए तो आप एक अपने फंड मैनेजर को हायर करते हैं और उसके जरिए आगे सारी अपनी तिजारत करते हैं। इसकी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप इनिशियली व्हेन इट स्टार्टेड इट वाज बेस्ड ऑन मुदारबा, बट रिसेंटली जो इस वक्त कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है फंड मैनेजर्स की और आदमी की, वो है इन्वेस्टमेंट एजेंट्स हैं, दे आर इन्वेस्टमेंट एजेंट्स। तो जो इस वक्त मैं पैसे लेके आता हूं, जिसको अरबिक में कहते हैं वकालतुल इस्तिस्मार, तो वो बुनियादी तौर पे जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप डेवलप होती है वो तो है वकालतुल इस्तिस्मार की। लेकिन इन्वेस्टमेंट एजेंट सिर्फ और सिर्फ कहने से इन्वेस्टमेंट एजेंट की लगाई हुई रकम पे जो मुनाफा मुझे आएगा वो हलाल नहीं होगा, जब तक इन्वेस्टमेंट एजेंट उन तमाम जगहों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करे जो शरिया की रिक्वायरमेंट है। उस जगहों पे पैसे को लगाए जहां शरिया की रिक्वायरमेंट है, उस जगह चीजों को इस्तेमाल करें जो शरिया की रिक्वायरमेंट है। तो उसका बेसिक याद रखिएगा, मामलात के अंदर जो बेसिक ट्रांजैक्शन स्कोप है शरिया ने जो डिफाइन किया हुआ है, जो बेसिक 3 स्क्रीनिंग क्राइटेरिया हैं हमेशा मामलात के अंदर, जब भी मामलात होंगे शरीयत ने उसके अंदर असल तो यही रखा है कि आम तौर पे मामलात जायज होंगे। हाँ, 3 चीजों को आप देख लें कि उसके अंदर वो मामला रिबा बेस्ड ना हो, डायरेक्टली रिबा बेस्ड ना हो, उसके अंदर कोई गैमलिंग, क़िमार, मैसर का उन्सर ना आ रहा हो, should not be based on gambling and मैसर,
And also the third one, which is very important, which is the gharar, is actually, which is ambiguity, उसके अंदर कोई uncertainty ना हो उसके अंदर. वो ये तीन मेन स्क्रीनिंग क्राइटेरियाज हैं. वो हम इसके अंदर भी तीन स्क्रीनिंग क्राइटेरियाज देख रहे होते हैं. फिर जब आप स्टॉक्स के अंदर जा रहे होते हैं बुनियादी तौर पे, तो सबसे पहले ये देख रहे हो कि स्टॉक्स जो हैं वो शरिया कंप्लाइंट हो. क्या मतलब शरिया कंप्लाइंट हो? कि आप क्योंकि स्टॉक्स खरीदने का क्या मतलब होता है? स्टॉक खरीदने का मतलब ये होता है कि मैं उस बिजनेस के अंदर बतौर शरीक के दाखिल हो रहा होता हूं. तो शरीयत पहले ये पूछती है कि जो मेन कोर बिजनेस है, whether this core business is halal, the activity what he is doing, whether it's halal. If the more core activity is halal, that you are allowed to be a partner of this business. But if the core activity is not halal, you are not allowed to be a participant in this business. So सबसे पहली बुनियादी चीज तो यही होती है. And then definitely fuqaha, they already mentioned for certain financial ratios also applied for the screening criteria, whether that क्योंकि इस वक्त बिजनेसेस के अंदर इतनी गुंजलक सिचुएशंस हैं कि बाज लोग मेन कोर बिजनेस तो उनका हलाल होता है, बट देयर आर सम एक्टिविटीज व्हिच दे आर डूइंग ऑन देयर फाइनेंशियल साइड आर नॉन कंप्लाइंट. उनको जाहिर सी बात है अगर ये सब्जेक्टिव कह के गुजर जाते हैं तो इसकी स्क्रीनिंग बहुत मुश्किल होती है. इसलिए फुकाहा ने वो निस्बतें तलाश की हदीस में बैठ के कि हदीस से चंद उसूल निकाले. वेदर देयर वर सम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स एंड कुछ चीजें फुकाहा ने बहुत क्लियरली डिफाइन की हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह. तो उसके ऊपर मेजरेबल स्क्रीनिंग क्राइटेरिया डिफाइन किए ताकि किसी को आगे एज पर रेगुलेटर वो चीज रेगुलेट करना आसान हो और एज पर इन्वेस्टर उसको ये स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के नतीजे में वो ये समझ सके कि हाँ ये चीज हलाल कब होगी. तो बेसिक वन इज कि वो ये देखेंगे कि जब कोई एक्टिविटीज को हम डिफाइन कर रहे होंगे तो प्रोवाइडेड एक्टिविटीज डेफिनेटली इफ दे बेस्ड इन एनी अल्कोहल्स, गैम्बलिंग, स्पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी, and also the conventional financial services also involved in it, conventional insurance, tobacco and indecent entertainment also. And then financial ratios में जब screening criteria में जा रहे होते हैं तो there are main ratios applied are the debt to equity ratio, cash and interest bearing ratio, securities to equity ratio, cash to asset ratio, and definitely there are different criteria in the world also. Like in Malaysia, the screening of the listed stocks is undertaken by a centralized body, the Sharia Advisory Council of SEC. In other jurisdictions, screening services are performed by individual institutions, and in Pakistan, normally this job is performed by Sharia advisors, and also internal Sharia compliance audit, and as well as external Sharia audits. So, बुनियादी तौर पे आज Islamic fund में as per regulator there are three checks. One is the internal compliance audit is there, the guy who is doing on daily basis compliance, and the second thing is definitely जब आप Sharia advisors उसको check कर रहे होते हैं. And then the third one is this external Sharia audit is there because Sharia advisors self-accreditation is not sufficient. You can't make the self-accreditation. So definitely there is a third party check is there, which is the external Sharia audit to ensure the transaction is based on the halal screening. So now this one is the stock exchange provides the market जहाँ पे हम इस वक्त जो कर रहे होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आपने देखना होता है वो ये है कि सेटलमेंट्स जो हम कर रहे होते हैं वो सबसे अहम चीज ये होती है कि जब आप स्टॉक्स में जाते हैं इसमें कुछ रूल्स के हम फॉलो करना होता है. यहाँ पर वो रूल्स ये फॉलो करने होते हैं कि शरीयत का एक बहुत बेसिक उसूल है तिजारत के अंदर, और वो उसूल ये है कि आप किसी चीज को इफ यू डोंट हैव अ पोजीशन ऑफ समथिंग यू आर नॉट अलाउड टू सेल दैट थिंग. तो पोजीशन यहां पर क्योंकि T+2 में कहीं पोजीशन आ रही होती है, कहीं दुनिया के अंदर कहीं T+1 पे पोजीशन आ रही होती है, तो जब आपकी पोजीशन में आ जाएगी आप उस वक्त सेल करेंगे. इस चीज को इंश्योर कर रहे होते हैं कंप्लायंस मैकेनिज्म भी. और जाहिर सी बात है जो इस वक्त इस्लामिक कैपिटल मार्केट जो इस वक्त बेस कर रही है, इस्लामिक बॉन्ड्स विद सुकूक्स आर देयर, शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स आर देयर, इस्लामिक फंड्स आर देयर, एंड देयर आर सम इश्यूज डेफिनेटली. एक तो ये होती है कि जो इस वक्त recent issues हमारे पास हैं, they're not permitted to purchase the shares by raising interest-bearing loans through a broker or someone else, and not permitted to pledge the shares of the interest-bearing loans. It's not permitted to sell the shares that the seller does not own, which is called the short sale, which is not allowed in Islam. And there are some criteria. I will cut down some criteria due to the shortage of the time. I will go to some various
certain have been developed by the scholars, screened by the strict eligibility, and सबसे पहले तो यकीनन इसमें बहुत बड़ा किरदार है डाउ जोन्स का. When the Dow Jones comes in it and the Dow Jones Index जब आया तो उन्होंने बड़े measurable screening criteria दिए and they played the good role for it. Although if we will compare, I'll go to further when our in Pakistan, which we made the screening criteria, it seems to be very conservative compared to Dow Jones criteria. اور وہ کنزرویٹو اس لیے رکھا تھا کہ ہماری مارکیٹ کی کچھ ڈیمانڈس ہیں. دے آر مور کنزرویٹو مارکیٹ. دے وانٹ مور شریعہ کمپلائنٹ تھنگس. اینڈ دا ادر ایسپیکٹ آف دا شریعہ ایڈوائزری بورڈز واز دیئر ٹو انشور کہ ٹرانزیکشنز اچھی سے اچھی ہوتی چلی جائیں, وہ مور شریعہ کمپلائنٹ ہوتی چلی جائیں. Then Mizan Islamic Market Index criteria is there. When I'm talking the conservative, so KMI you will find is a more conservative criteria compared to Dow Jones criteria. Now, when we come, is the definitely the basic business of the invested company. Now, this is the Dow Jones Islamic Market Index criteria. Debt to market capitalization, they will see the total debt divided by the 12 months average market capitalization should be less than 33%. And the cash and interest-bearing securities, the sum of the company's cash and interest-bearing securities divided by the trading 12 months average market capitalization should be less than 33%. اور یہاں پر انہوں نے اس حدیث کو معیار بنایا ہے کہ جو سلس کے بارے میں آتی ہے, اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ الثلث کثیر, کہ سلس بھی جو ہے وہ میکسیمائز شمار ہوتا ہے, میکسیمم شمار ہوتا ہے, 1/3 کو بھی میکسیمم شمار کیا ہے. تو اس کو بیس بنا کے انہوں نے اس جگہ پر 1/3 کو رکھا ہوا ہے. اینڈ اکاؤنٹس ریسیویبلس ڈیوائڈ ٹریڈنگ 12 months ایوریج مارکیٹ کیپٹلائزیشن شوڈ بی لیس دین 33%. اور یہ جو اس کے بعد میزان کی debt to total asset, the interest bearing debt of the invest company should not exceed 37% of the total assets. Illiquid assets to the total asset, total illiquid of the investment company as percentage of the total assets should be at least 25%. Although there are some, when it started initially it was 50% also in internationally, اور اس کے بعد جو ہے وہ we had a 40% also. تو یہ جو ساری کی ساری چیزیں بن رہی ہوتی ہیں یہ بنیادی طور پہ اس لیے ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ جامد اثاثے ہوں, ورنہ پیسے پہ پیسہ نہ ہو. اور سود کا عنصر سے بچنے کے لیے یہ لگائی جاتی ہیں. Investment in shares non-compliant activities, total investment of the investment company in Sharia non-compliant business should not exceed 33% of the total asset. Income from Sharia non-compliant investments, the income from Sharia non-compliant investment should not exceed 5% of the gross revenue of the investing company. اس میں یہ بنیادی طور پہ کرائٹیریا ہوتا ہے جب کسی اسٹاک کو خرید رہا ہوتا ہے آپ کا فنڈ مینیجر, آپ کا وکیل جب کسی اسٹاک کو خریدنے کے لیے جاتا ہے, وہ اس اسٹاک کے فائنینشیلز کو جس اسکریننگ کرائٹیریا سے گزار رہا ہوتا ہے, جس ڈیو ڈیلیجنس میکانزم سے گزارتا ہے, وہ یہ بنیادی طور پہ ڈیو ڈیلیجنس میکانزم. Net liquid asset, the share price, the net liquid asset per share should be less than the market price of the scheme. Now, اس کے بعد جو بنیادی طور پہ ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ اس کے بعد بھی یہ نظر آتا ہے کہ جب اس کے بیلنس شیٹس آ رہے ہوتے ہیں, کوارٹرلی ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں, ہمیں یہ پتا چل رہا ہوتا ہے کہ انیشلی وہ نہیں لے رہے تھے, کوئی اس نے انٹرسٹ بیئرنگ لونس نہیں تھے اس کے پاس, پھر بڑھ گئے تعداد میں, یا یہ کہ سودی انکم نہیں آ رہی تھی لیکن پھر سودی انکم آنے لگی اس کے پاس, تو اس کے بعد پیوریفیکیشن میکانزم اس کے ساتھ موجود ہے تاکہ حرام کا عنصر اس حلال انکم میں شامل نہ ہونے پائے, اور اس کے بھی ضوابط موجود ہیں. It's necessary to provide the earnings by deducting from the returns on the investment those earnings emanating from an acceptable source from a Sharia point of view. In context of equity investment, according to the Sharia standards, it's obligatory to eliminate provident income that's mixed up with the earnings of the company, and this obligation is the one who is the owner of the shares. ڈیفینیٹلی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن اس شیئر ہولڈر تک پہنچنے کے لیے تو مشکل ہوتا ہے, اس لیے وہ اپنی یہ ذمہ داری اپنے وکیل کے سپرد کرتا ہے, اور وہ وکیل جو ہوتا ہے جو کہ فنڈ مینیجر ہوتا ہے وہ اس کے بہاف پہ کسی اسکریننگ کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے, اس پیوریفیکیشن کو. ایلیمینیشن از not obligatory for the intermediary agent or manager out of the part of their commission or wages, because this is their right in lieu of the work they have undertaken. In case of fund management, it is the responsibility of the management company to eliminate the provident income according to a Sharia standard. For the determination of the percentage of the provident income, the source should be the last verified financial position.
Here, we'll calculate the percentage of non-compliant income of the gross revenue, sales plus other income for each investing company, and this percentage is called as the charity rate. कीमत फरोख्त से हराम आमदनी का तनासुब निकालते हैं और उस कीमत फरोख्त से हराम आमदनी का तनासुब निकाल के चैरिटी का रेट निकालते हैं और वो चैरिटी की जाती है. And the charity rate of each investing company is multiplied with the varied income from respective companies to get the charitable amount. This charitable amount is then transferred to a separate account और उस separate account के बाद फिर वो खास charitable सिर्फ और सिर्फ जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्हीं में वो चैरिटी दी जाती है. ये चैरिटी अमाउंट जो होता है वो फंड मैनेजर अपनी एक्टिविटीज में इस्तेमाल नहीं कर सकते, मार्केटिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि वो जो चैरिटेबल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं में ये चैरिटी दी जाती है. The Sharia advisor verifies the whole process of the elimination of the provident income and issues a certificate to be included the annual accounts of the fund. इस प्योरिफिकेशन से इसको गुजारा जाता है. सॉरी, इसमें जो चीज एक बहुत अहम अंसुर है which I really want to share with you because the fund managers are sitting here and the regulator is as well is there, कि इस वक्त हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये है कि although research is required in this area, but the awareness is the most important thing because mostly our stakeholders they don't know that कि ये कितनी अच्छी फैसिलिटी उनको अवेलेबल है, खास तौर पे लो इनकम पीपल. हम तो आम तौर पे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट कल्चर को हम जो है वो हिट कर रहे हैं और जो इस वक्त इंटीरियर है, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीरियर सिंध, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीरियर पंजाब, वहां पर ये अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं और खास तौर पे चंद वो तबकात जो बहुत ही लो इनकम तबकात है और वो अपनी मार्केट के अंदर ऑलरेडी इस किस्म की स्कीम्स, बचत की स्कीमें अपने घरों में चला रहे हैं. तो मिसाल के तौर पे हमारे लोग जो है वो आपको अंदाजा है कि लोग कमेटियां डालते हैं और कमेटियां डाल के जो है वो जमा कर रहे होते हैं. तो आप अगर उनको आप ये अवेयरनेस दे दें कि यहाँ पे आप ये कमेटी भी डाल सकते हैं, सेविंग भी हो सकती है, बल्कि इस पर आपको प्रॉफिट भी आ सकता है इस पर, तो वो उस अवेयरनेस की जो है वो इस वक्त जरूरत है उन स्टेक होल्डर्स तक पहुंचने के लिए जो बहुत ही जो आपकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है और जहां पे शायद इस वक्त फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मौजूद नहीं है, लेकिन वहां इसके जरिए पहुंचा जा सकता है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा जरिया है और इसके अल्हम्दुलिल्लाह इसको रेगुलेटर्स भी इंश्योर कर रहे होते हैं, शरिया एडवाइजर्स भी इंश्योर कर रहे होते हैं कि ये आमदनी जो है यहाँ पे हलाल रहे. जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया मुफ्ती नजीब खान साहब for providing us a very thorough insight of the Sharia screening process. And now I will request the session chairman, Dr. Zubair Usmani sir, to summarize this session. Dr. Zubair Usmani sir. Dr. Zubair Usmani sir is the Sharia advisor of MCB Bank Limited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम. मैं अल-हुदा वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने अहम मौजू के ऊपर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की और इस टॉपिक के ऊपर कॉन्फ्रेंस हमारे पाकिस्तान में बहुत कम होती है. इस लिहाज से भी ये काबिल सताइश है कि उन्होंने एक अहम मौजू के ऊपर इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया. जैसा कि आपने मुफ्ती नजीब साहब की, मीर मोहम्मद अली साहब की और कामिल अली साहब की प्रेजेंटेशन सामने सुनी, देखी, इन सब बातों को सामने रखते हुए चंद बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ और वो ये है कि इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक फाइनेंसिंग, इस्लामिक फंड्स, तकाफुल, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई साल से पाकिस्तान के अंदर ये कंपनीज काम कर रही हैं और बड़ी कामयाबी के साथ चल रही हैं. लेकिन हम सब यहाँ चूँकि बैठे हैं सीखने के लिए, सिखाने के लिए, इसलिए कुछ बातों का हम लोगों को ख्याल करना भी ज़रूरी है. प्रिंसिपल्स आप हज़रात ने सुन लिए, मैकेनिज़्म आप हज़रात ने देख लिए. इंशाअल्लाह शाम तक और भी नई नई चीज़ें आपके हज़रात के सामने आती रहेंगी और आप हम सब की नॉलेज में इजाफे का बाइस होगा.
لیکن جو پرابلمز اس وقت تمام سیکٹرز میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اسلامک بینکنگ میں بھی، اسلامک فنڈز میں بھی، تکافل کمپنیز میں بھی، اور جتنی بھی اس طریقے کی سروسز چل رہی ہیں ان میں بھی، وہ پرابلمز یہ ہیں کہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہو رہا ہے. لوگ کم اعتماد کر رہے ہیں اسلامک بینکنگ کے اوپر، فائنانسنگ کے اوپر. یعنی جتنی ہماری توقعات تھیں ان کے مقابلے میں لوگوں کا اعتماد اتنا زیادہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کچھ اثرات ماضی کے طرز عمل کا بھی رہا کہ 80s کے اندر اسلامی بینکنگ شروع ہوئی، کامیاب نہیں ہوئی، اور بینکنگ سیکٹر کا بھی رہا کہ جو ایک عرصے سے ان کا کام سلسلہ چلتا رہا. لیکن کچھ ہم لوگوں کو اپنی بعض باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. شاید کہ وہ چیزیں اگر ہم کنٹرول کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت مفید ہوگا ہماری انڈسٹری کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں جو اسٹاف موجود ہوتا ہے، مارکیٹنگ کا ہو، آپریشنز کا ہو، بزنس کا ہو، وہ انٹرینڈ ہوتا ہے. ان کو کوئی نالج نہیں ہوتی. کنوینشنل سے تو ٹرانسفر ہو گئے یا کنوینشنل کو چھوڑ کر اسلامک میں آ گئے، اب بالکل فریش ہے، کوئی نالج نہیں، کوئی ٹرم نہیں جانتے. جب کلائنٹ ان سے باتیں کرتا ہے تو وہ وہی ٹرم بول رہے ہوتے ہیں کلائنٹ کے سامنے، تو کیسے کوئی مطمئن ہوگا آپ سے؟ اس کو کیا اس کو خود نہیں پتا کہ اس کے پروڈکٹ میں کیا لکھا ہے. ہمارے اسٹاف کے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پروڈکٹ میں ہے کیا، تو وہ کیسے دوسرے کو مطمئن کریں گے؟ بعض اداروں نے یہ غضب ڈھایا ہوا ہے اسلامی بینکنگ سیکٹر کے اوپر کہ کنوینشنل اور اسلامک کی مارکیٹنگ ایک ہی سٹاف کر رہا ہے. اس کے ایک پاؤچ میں اسلامک کی بھی پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے، اس کے اسی پاؤچ کے اندر کنوینشنل کی بھی پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے جی آپ کو اسلامک کی چاہیے تو یہ لیجیے، کنوینشنل کی چاہیے تو یہ لیجیے. جب کلائنٹ ان سے پوچھتا ہے کہ جی دونوں میں فرق کیا ہے تو اس کو خود فرق نہیں پتا ہوتا، تو وہ کیا کلائنٹ کو مطمئن کرے گا؟ اس سیکٹر کی ان باتوں کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں. اسلامک فنڈز ہوں، اس بینک ہوں، تکافل کمپنیز ہوں، بہت زیادہ پرابلمس. اس لیے ان پرابلمس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کم از کم اسٹاف کی ٹریننگ، اسٹاف کو نالج